factor, which is because very important as far as the electrical utilities are concerned. So let us again discuss few of the things may get repeated like a power triangle, but I think this repetition is good as far as electrical stuff is concerned, because we are not quite familiar with the electrical terminology. So the frequent bombardment and repetition may help you to understand the things. So power factor, as we discussed, that the electrical loads are nothing but a pure resistance load, and but in actual electrical heaters in our room, but most of the industrial loads are not only resistive loads, they are also having some reactance parts attached to it, and the combination of this resistance and reactance is called as the impedance. Okay? So here onward, whenever I say impedance, the word impedance means it is nothing but the combination of resistance and reactance. So it means that the impedance load mean this load is having resistive as well as reactive load, right? And reactance come in two forms. One is inductive and one is capacitive, right? So we are just decluttering the things. First we are understanding what is impedance. Okay, impedance is the combination of resistance and reactance. But what is resistance, we all know that, right? Nothing new in that. But what is reactance, right? So reactance is comes in two forms, inductive and capacitive. And this reactance part, inductive as well as capacitive, both of which do not contribute to useful work on the power system, right? So inductive as well as capacitive both will not contribute to useful power. So it means that whenever you are saying impedance means resistance and reactance in which this reactance is of no use. So, as an electrical engineer or as an utility engineer, you always try to keep your reactance part as low as possible, right? Because reactance will not contribute to the useful work, right? So, power factor is a way to characterize how much electrical power goes to producing useful work. Means, of course, how much is the resistive load in that particular circuit, and such as in lighting, heating, machinery, anywhere wherever you use electricity. So if you know the power factor for that particular utility, then you can say that whether uh, amount of electricity supplied is used for producing useful work or not. So that is given by this power factor. So low power factor means a large amount of energy is lost in the form of wasted heat, which generally equates to higher electricity bill. And not only your electricity bill will get affected or you have to pay more, but your electrical equipment gets degraded. Okay, or sometimes its life may reduce, right? So these are the effects. What is power factor and its harmful effect we already learned. And I think this power triangle, if you remember that, this power factor, again once again this power factor comes here, and we know that the base is nothing but the real power, and the height is the reactive power, and the apparent power, right? The apparent power is the diagonal of this power triangle is the apparent power, right? And power factor is nothing but the ratio of real power to apparent power. And this is the phi, the angle. And as we all know that what you are trying to do, you are trying to reduce this phi, and it means you are trying to reduce this height reactive power, and this reactive power is nothing but the power which is going to be wasted. Okay, so you are trying to reduce this component. Okay, and for what to do, I think in the last lecture we already discussed what to do. And anybody, will you please write the answer what to do in order to improve the power factor? वो phi angle को कम करना है, and you have to improve the power factor. Means अगर 0.7 है तो I have to improve power factor from 0.7 to 0.9 or 0.99. तो क्या क्या measures लिए जाते हैं, what we are going to do, that we already discussed. What are the different remedies? Write down.
अगर आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहां पे यू ऑब्जर्व एट द एंड ऑफ द मंथ दैट इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल power factor is poor 0.7 and you have to improve the power factor. What suggestion you will give to the your manager? What should we do to improve the power factor? I'm waiting for your answer. Nobody? Strange, isn't it? We spent at least two lectures on the basic electrical utilities, power factor. So I'm expecting answer from you. What you will do to improve the power factor? Nobody? Okay, fine. So one of the solution that we discuss is nothing but to add a capacitor in the circuit. Okay, capacitor bank, right? So capacitor add करेंगे circuit में तो it will help you to improve the power factor, right? So most of the loads like motor solenoid pumps have a impedances that are combination of resistance and inductance that I already told you that these devices, particularly the electrical motors, because these motors you cannot imagine most of the equipments in the industry without motor. So most of the instruments or yeah, what you can say utilities are attached are having electrical motor as the prime mover. So whenever motor is attached, it means it is having impedance. Impedance is nothing but presence of resistance plus inductance, and inductance is of no use, right? So what is the suggestion? Our suggestion is to add a capacitor. So capacitors, why, what capacitor will do? I leave that question at that time for you, that to find out why, what capacitor actually do. We have done the sizing of capacitor, kitna capacitor बिठाना है, कहाँ पे बिठाना है, what the location of capacitor, we, everything we discuss. But the important point that I left at that time was why capacitor. Capacitor ऐसा क्या करता है कि your power factor will improve. So this capacitor is having itself, because I think in the previous slide uh, we have written that inductive and capacitive both do not contribute to useful work. तो हम capacitor add करके power factor improve कर रहे हैं, वो already capacitor भी और capacitance will not do anything useful work. So why capacitor? That question I left to you, but I'm not expecting answer from you because you don't know capacitor is added in the circuit to improve the power factor. So this basic question, the answer you doesn't know how you will answer कि why capacitor is added. But let me answer that, and hopefully that will be uh, a great learning for you, because this is a very very important question, and generally ask whenever you work in the industry, that what capacitor actually do to improve the power factor. Clear? And so the answer, for to understand the answer you have to understand this waveform, voltage and current waveform. And what you observe that uh, in general reactance circuit, or if suppose motor is connected in your electrical circuit, so that motor is, we know that motor is having impedance, means it is having resistance as well as inductance. And we know that these inductance are the the job of this inductive reactance is nothing but it will leads to voltage and current sine waves will shift out of phase. तो साइन वेव्स और करंट वेव जो जनरली आइडियल क्लीन पावर कैसा होता है, जहाँ पे वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज होते हैं,
but because of this impedance load like motor side circuit में आने की वजह से this voltage and sine waves will shift out of phase from each वो out of phase चले जाते हैं but वो कैसे जा how they will goes out of phase तो out of phase कैसे जाते हैं voltage leads current with inductive reactance right voltage lead करता है current को right and as shown here voltage lead कर रहा है देखो the black sine wave is of voltage and the dotted orange sine wave is of current तो आप देखो कि पहले पीक कहाँ पे आ रहा है वोल्टेज का पहले आ रहा है और करंट का बाद में आ रहा है दैट्स व्हाई वोल्टेज हु इज लीडिंग तो ब्लैक लाइन ब्लैक साइन वेव which is of voltage is leading the current which is of orange राइट तो दैट्स व्हाई इट इज लीड वोल्टेज लीड्स करंट आपको अगर रीड करना है इस वेव फॉर्म को तो कैसे रीड करेंगे वोल्टेज इज लीडिंग द करंट राइट बाय फाई यहाँ पे दिया है उसको कितना टाइम तो फाई एंगल दिया है डिग्री so it is voltage leads current by phi in phase it implies that it is a inductive circuit कौन सा भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वहां पे आपको अगर दिख रहा है क्या अरे वोल्टेज और करंट फेज में नहीं है आउट ऑफ फेज फाइन लेकिन लीड कौन कर रहा है वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है तो इन द गिवन डायग्राम इट इज द वोल्टेज विच इज लीडिंग तो ये कब होता है इन इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर उस सर्किट में इंडक्टिव लोड्स होंगे तो वोल्टेज आप तो आंख बंद करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तो कोई मोटर लगी होगी कुछ तो इंडक्टिव लोड होंगे उसकी वजह से वोल्टेज इज लीडिंग द करंट अगर उल्टा हो रहा है कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज तो आपको आंख बंद करके बोलना है अरे यहाँ पे कुछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा मीन्स कुछ कैपेसिटिव लोड होगा बिकॉज ऑफ दैट करंट इज लीडिंग द वोल्टेज राइट तो अभी आप क्या करते हैं that we generally use the phase in day to day life that कांटे से कांटा निकालना right the same thing is we are doing with the capacitor कांटे से कांटा कैसे निकालते हैं so what is our problem is that voltage and current should be in phase लेकिन वो out of phase चले गए because of the presence of reactance load inductive reactance अभी voltage is leading the current तो क्या करना पड़ेगा मुझे ऐसा डिवाइस बिठाना पड़ेगा वो क्या कर रहा है जिसमें अभी करंट लैगिंग है ना तो वो करंट को लीडिंग करे तो अभी अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अगर कैपेसिटिव लोड ऐड करेंगे तो कैपेसिटिव में क्या होता है करंट लीड्स द वोल्टेज now previously in inductive loads because of motor is connected in the circuit voltage लीड कर रहा है करंट पीछे पड़ रहा है पीछे रह रहा है तो करंट को लीड करना है तो मैं कैपेसिटर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा करंट अभी आगे जाने की कोशिश करेगा जो पीछे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे राइट so very simple analogy कांटे से कांटा निकालना kind of thing so the this is what capacitor do why we add capacitor in the circuit capacitor कोई useful work नहीं करता है but what capacitor does capacitor is uh, leading is it pushes the current and which is lagging because of the inductive reactance and because of that the voltage and current then will be in phase understand please leave the message in the chat box so that I will move ahead because this is a very why I am emphasizing on this particular point is because lots of time we know that capacitor आप अब आज भी industry में जाओगे and you just ask to any I am betting that most of the electrical or as well as other engineers working in this utility department they will definitely told you कि power factor कम है हाँ तो चलो capacitor लगा दो but if you ask them sir why capacitor why not some other device no very few people are able to answer that right so this is that's why this reason should be no the remedy everybody knows power factor कम है तो आग बंद करके बताएंगे कि चलो आप कैपेसिटर बैंक लगा दो आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा दैट इज राइट बट हाउ कैपेसिटर तो इसकी वजह से दिस the the sentence underline here or this waveform will give you the answer right तो वोल्टेज लीड करता है करंट पीछे है तो करंट को भी आगे लेके जाना है तो ऐड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द सर्किट which will result into voltage and currents are in phase understood I'm waiting your lecture in the background for attendance fine okay because this why I'm emphasizing because I took lots of efforts for me also during my initial stage while conducting energy audits in the industry
to understand these terminologies. And this is what I'm telling. This slide is the summary of what I learned in first 2 3 years of my energy audit practice, that how to make it as simple as possible. And this is what the summary is in front of you. Okay, fine. I hope you understood this. So the summary is that we are going to, if my power factor is very less, okay, or it is not unity, so what I'm trying to do, I'm trying to improve my power factor and try improve up to unity by adding capacitor in the circuit. Very straightforward thing, right? Size kitna capacitor add karna hai, etc, all we have already discussed in the previous lecture, right? नेक्स्ट इज पावर फैक्टर इंप्रूव क्यों करना है, तो जैसे यहाँ पे बोला है कि आउट ऑफ फेज हो जाते हैं तो फेज में लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो डी रेटिंग ऑफ और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टुक प्लेस. सो also uh, utility utility bills, you have to pay the charges or the penalty, what I am saying. So one of the electrical bill I have just kept here for your reference. So एक कस्टमर है, एक होटल का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नासिक का ही है. एंड what you have to see is that power factor, okay, in this row it is written that power factor penalty charges or power factor incentives, right? तो कितने रुपीस है, 1230 rupees plus है, okay. Plus means it is added in the bill, so you have charge this, so this is a penalty. Why penalty? ये पर्टिकुलरली होटल का बिल है, एक छोटा होटल है, तो उस होटल को जो बिल आया है उस बिल में पावर फैक्टर पैनल चार्जेस और इंसेंटिव में लिखा है 1230. जिस 1230 रुपीज इज पॉजिटिव, मीन्स इट इज एडेड इन द बिल, आपको भरना है. इट मीन्स इट इज अ पेनल्टी. तो उनको पेनल्टी क्यों बैठी, तो व्हाट इज द पावर फैक्टर, देखो एसेस पावर फैक्टर और एवरेज पावर फैक्टर ऑफ दैट होटल इज 0.89. देखो बिलो 0.95 है, राइट, यूनिटी नहीं है, तो पावर फैक्टर कम है, तो उनको 0.89 पावर फैक्टर होने की वजह से हमने देखा था कि 5% ऑफ द चार्जेस, 10% ऑफ जो भी टेरिफ जो पेनल्टी का स्ट्रक्चर है एज पर, उनको पेनल्टी लगा है 1230. तो पर मंथ उस होटल को पे करने पड़ रहे 1230 एक्स्ट्रा, बिकॉज देयर पावर फैक्टर इज पुअर, 0.89 है. तो वो क्या करेंगे, आप जाओगे उस इंडस्ट्री में एज एन ऑडिटर, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा इलेक्ट्रिकल बिल पावर 0.89, तो सीधे मैं बता दूंगा कि चलो कैपेसिटर बिठा दो, अटैच कैपेसिटर बैंक अक्रॉस द योर यूटिलिटी, तो क्या हो जाएगा, आपका पावर फैक्टर इंप्रूव होगा और ये 1230 से ये कम हो जाएगा. वेरी what you can say, very common practice nowadays to do that. Anybody, not an even engineer, simple electrician may give you suggestion that sir आपका capacitor bank लगा दो. Fine. So this is one of the common practice nowadays to improve the power factor. But the question is, right, what are the disadvantages of this thing, कि इस कुछ हर एक जो होता है चीज, right? Today we are discussing the COVID vaccine, but back of the mind we are just afraid of whether what are the side effects of that vaccine, what will happen, because hurriedly everybody in the world are now trying to find out the vaccine, efficient vaccine, right, on the COVID. But because of this hurried development and less trials, we are again we are not 100% sure that this vaccine will work, or it may leads to some other uh, side effects, right? So likewise, हर जो every that solution or cure is having its side effects. Like this cure of this power factor improvement, ये जो disease है इसको cure करना है, तो the remedy is capacitor bank बिठा दो. But this capacitor bank may leads to one thing, that the answer is itself here कि current leads the voltage. अगर आपने कैपेसिटर बहुत बड़े साइज का बिठा दिया विदाउट एनी प्रॉपर कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा, योर करंट लीड्स द वोल्टेज, मतलब उल्टा हो जाएगा कि लीडिंग पावर फैक्टर. तो पहले आप देखो कि ये 2018 का बिल है. इन 2018 वहां पे ये जो बिल के बैक साइड में ये जो टॉप का करंट कंजम्पशन डिटेल होते हैं, वहां पे आप देखोगे KVAH लैगिंग, LAG स्टैंड्स फॉर लैगिंग, तो RKVAH लीडिंग.
and this column of R kVAH leading is zero, means in 2018 nobody is bother about, or MSCB is also not bother about kVAH leading, तो हो ही नहीं सकता करंट, राइट? क्योंकि मेन प्रॉब्लम पावर फैक्टर कम है तो लैगिंग होगा, ऐसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग था। और इसके ऊपर पेनल्टी बैठती थी कि आपको लैगिंग है, इसका मतलब पावर फैक्टर कम है एंड you have to uh, pay the penalty. But what happens now, because of the awareness is created in the industry and lots of people without any proper assessment and analysis are just simply adding up the capacitor in their circuit. तो because of over ज्यादा डोज भी लिया किसी वैक्सीन का, तो that is also having its side effects. Likewise कैपेसिटर बहुत ज्यादा बिठा है तो क्या होगा, your current may leads the voltage, और उल्टा इफेक्ट हो जाएगी, पावर फैक्टर विल गो बियॉन्ड वन, राइट? उसे कहते हैं हम लीडिंग, तो आर के वी एच लीड भी हो जाएगा। तो अभी जनवरी 2019 से एमएससीबी ने आर के वी एच लीडिंग के ऊपर भी पेनल्टी शुरू कर दी है। मतलब किसी डिसीज के लिए इलाज है, लेकिन वो इलाज जो है एज पर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, अगर आप खुद ही उसका टैबलेट्स लेने लगेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर मे बी सम डिसएडवांटेज, इट मे डैमेज योर लीवर एंड ऑल दैट। लाइकवाइज इन केस of these electrical utilities, अगर आप कैपेसिटर बैठाते जाओगे without any proper prescription or the analysis, what will happen, your current leads the voltage, जो lagging था वो अभी बहुत ज्यादा लीड हो जाएगा, and your power factor go beyond वन, वन के आगे आपका कुछ, nobody has asked कि वन के आगे होता है, yes, power factor go beyond वन, and at the in that case you have to पेनलाइज फॉर दैट। तो 18 का बिल है, इसलिए यहाँ पे आरकेवीएच का कोई फैक्टर नहीं है। आप देखोगे ये 2019 का बिल है, तो इस 2019 के बिल में एक जनवरी के बाद का, तो एज यू कैन सी दैट के वी एच लीडिंग इज ऑल्सो कंसिडर। देखो लीड का पहले जो बिल था पुराने, इसमें जीरो था, नाउ आर के वी एच लीडिंग इज ऑल्सो। तो एमएससीबी को उसका भी प्रॉब्लम है, लैगिंग है करंट तो भी प्रॉब्लम है, लीडिंग है तो भी प्रॉब्लम है। तो आइडियल क्या होना चाहिए, लीड भी नहीं होना चाहिए और लैग भी नहीं होना चाहिए, इन फेज होना चाहिए करंट एंड वोल्टेज। दैट्स व्हाई नाउ लीडिंग का आर के वी एच लीड भी है तो आपको पेनल्टी बिठेगी। अंडरस्टूड? Okay, fine. So I think I made this point clear regarding power factor and why capacitor bank is added, and what happens if capacitor bank is not properly sized, over capacity है capacitor का तो भी आपको penalty बैठेगी, and that is also being considered by MSCB with this new uh, parameter, that is RKVH leading will also consider, right? Now move to next point, that is a balance and unbalanced load, right? Now students, in our at our home as well as in the industry, lots of time what happens that out of the three phases, I think everybody knows there are three phases, R, Y, B, clear? And in these three phases loads are equally distributed, then we can say it is a balanced load, right? So in the first diagram, as you can see that the loads are balanced, three phases are equal aparts, 120-degree aparts, and they are balanced. But what happens if load is unbalanced, right? And it is because of the some single phase loads attached in your at your office or in the industry, like lighting और छोटे छोटे ऑफिस इक्विपमेंट्स है, वो लोड क्या होते हैं, सिंगल फेज लोड्स होते हैं। और वो सिंगल फेज है, सपोज मेरे ऑफिस में 10-15 अलग अलग इक्विपमेंट है मेरे फैक्ट्री में, लेकिन उस 10-15 में से 50% ऐसे है कि वो सिंगल फेज पे चलते हैं। अभी सिंगल फेज पे है तो आर वाई भी है, तो अगर मेरे पास 10 लोड है तो मैं इक्वली तीन तीन लोड तीनों इसके ऊपर ये करूंगा। लेकिन क्या हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे छोटे डिवाइसेस एक ही फेज के ऊपर, तो आर फेज के ऊपर ही अटैच होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट एक सिंगल फेज है वो ओवरलोडेड हो जाता है, और बाकी का कोई फेज है वो अंडरलोड हो जाता है, एज यू कैन सी दैट इन अनबैलेंस लोड। और इसकी वजह से बैलेंस भी बिगड़ा, 120 डिग्री अपार्ट है थ्री फेजेस। एंड नाउ एक एक फेज देखो, यहाँ पे ब्लू जो दिख रहा है, ये ब्लू क्या है, 130 एम्पियर का लोड उसके ऊपर कनेक्टेड है। जनरली तीनों के 100 100 100 होने चाहिए। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एक इसका ज्यादा हो गया है कि 113, एक इसके ऊपर आ गया है, और एक अंडरलोड है एक फेज। तो दिस टाइप इज कॉल्ड एज ए अनबैलेंस। जो खेती वगैरह करते हैं या फिर जिन्होंने कभी
इक्विपमेंट्स हैंडल किए हैं, उनको पता है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जो फेज है, किसी एक फेज पे मोटर नहीं चल रहा है, सिंगल फेज मोटर है, तो हम वो फेज चेंज करके देखते हैं। जनरली in case of rural areas this problem is quite often कि एक कोई single phase overload होता है, and this unbalance is again the problem। उसकी वजह से वो जो सिंगल, देखो ये जो वायर है, एक ही वायर में से 3 113 एम्पियर 100 एम्पियर जाना चाहिए, एंड more current is passing and we know that I square R। तो बहुत बार ऐसे होता है, देखो कि वो लाइन जल गई, एक सिंगल लाइन, बिकॉज of the overheating of that cable, it may get burn out, right? So such type of things happen because of balance and unbalanced load। तो उस केस में क्या करना चाहिए, एज एन ऑडिटर व्हेन गो टू इंडस्ट्री, आपको हर फेज का वोल्टेज और करंट मेजर करना है, चेक करना है। अगर किसी फेज में बहुत ज्यादा करंट है, तो क्या सजेशन दोगे आपको? वेरी कॉमन सेंसिबल सजेशन होगा कि उस फेज में से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दिख रहा है कि इस फेज में, ग्रीन वाले फेज में ओनली 72 एम्पियर एंड ब्लू में 113 है, तो इसमें से कुछ में इस कुछ लाइट लगाएंगे, फैन हो गए, वो निकाल के इस फेस पे लगा दो, सो दैट ये बैलेंस हो जाएगा। वेरी सिंपल सॉल्यूशन टू दैट, राइट? अनबैलेंस लोड के क्या क्या डिसएडवांटेज है, एज आई टोल्ड यू कि ओवर हीटिंग हो जाएगा, मोटर्स ड्रिवन बाय अनबैलेंस वोल्टेज रिजल्ट इनटू स्मॉल मोटर टॉर्क्स, और इन सम केसेस अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क भी ये होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दिस इज आल्सो वेरी हार्मफुल। तो आपको फाइनल जो होता है कि मेन टॉर्क प्रोड्यूस करना है, तो उसको काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट, मोटर विल डिलीवर लेस वर्क। Clear? Now let us comes to the last point and very important, that is the harmonics. This word you will again hear lots of time in the industry, whenever you are dealing with the electrical utilities, is the harmonics. So what is harmonics? Harmonics is the form of waveform distorted that occurs in the circuits, particularly where the semiconductor based electronic devices are attached, like LED, switching power supply, electronic ballast, computer, robots, test equipment. As you can see that right now, from this sentence it is clear that harmonic produce होते हैं because of this semiconductor based electronic devices। And interestingly, out of the equipment listed here, most of the equipment we are using at our home as well as in the industry, lots of LED. Today we are talking about everywhere replace the conventional incandescent lamp or CFL lamp with the LED lamp। तो इसका मतलब LED भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट भी बढ़ रहे हैं, जो आपके ट्यूबलाइट्स में होते हैं, देन कंप्यूटर्स तो एवरीवेयर है। एंड दीज ऑल सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस क्या करते हैं, इट डिस्टॉर्ट्स द sine wave, or the simple general say that waveforms, it distorts the waveforms, okay? And these loads are called as a non-linear loads, okay? Loads, and they impose high frequency sine wave on the system, which results into more power lost in the form of wasted heat, okay? तो ये एक problematic है कि nowadays semiconductor based devices बढ़ रहे हैं जो होते हैं non-linear loads, and because of the non-linear loads, more and more power is lost. Clear? And excessive heat produced by the harmonics can leads to damage to your power system, and the transformers are especially susceptible to this damage caused by the harmonics due to stray eddy currents which circulates in the iron core and produces excessive heat. So that is one of the thing that most of the time transformers may get burnout, right? So what is this harmonics? As you can see that the fundamental frequency, suppose we are in India, we are having 50 hertz frequency, so red sine wave form shows that okay 50 hertz hai, तो this kind of sine wave you can observe। but because of the harmonics, अगर third harmonics है, तो what will happen as shown in the छोटे छोटे fifth harmonics like this, तो frequency will improve। पहले कितना था frequency, सिंगल वेव फॉर्म प्रोड्यूस करने के लिए इतना था, थर्ड में कितना कर रहा है, एक, दो और तीन। देखो जो जहाँ पे एक सिंगल वेव फॉर्म था, वहां पे तीन वेव फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज अ थर्ड हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक्स में कितने वेव फॉर्म तैयार हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, that's why it is the fifth harmonic। सेवन में you can count कि यहाँ पे सेवन ये हो रहा है, राइट? आप you can count the peaks, राइट? यहाँ पे एक पीक है, यहाँ पे
7 है, तो that's the seventh harmonics and resultant. But what is the dangerous is that the resultant is like the waveform is shown in yellow is the resultant of all these harmonics distort हो गए because of connecting the non-linear road. तो पूरा yellow दिखा रहा है कि कितना distort है साइन waveform अगर ऐसा होगा तो just imagine how your it will affect your electrical equipments attached to that, right? So this is the harmonics. Harmonics is nothing but the distortion of your waveform because of the non-linear loads. Clear? So हार्मोनिक्स कैन आर आइडेंटिफाइड बाय देयर फ्रीक्वेंसी. उसको कैसे पता चलेगा आपको आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स है? तो व्हाट यू कैन डू, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी मेजर करो, अगर 50 हर्ट्ज है तो दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अगर आप मेजर कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? अरे ये तो मोर देन बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज इन इंडिया, लेकिन आपको मेजर कर रहे हैं 150 हर्ट्ज, तो कितने टाइम हो गया? 3 टाइम्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए थर्ड हार्मोनिक. अगर 250 हर्ट्ज दिख रही है तो विच इज 50 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 250, इसका मतलब ये कितना 5 फिफ्थ हार्मोनिक्स है. तो हार्मोनिक्स, जस्ट इमेजिन दैट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनिक्स व्हाट विल हैपन. ओके, क्योंकि ये डिस्टॉर्ट कर दे रहा है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर यूजिंग पावर क्वालिटी मीटर्स. ये कैसे मेजर, मैं ये सब बात कर रहा था प्रीवियसली आल्सो. आई टोल्ड यू कि वी हैव टू मेजर दैट वेदर इट इज इन बैलेंस अनबैलेंस, पावर फैक्टर में यहाँ पे की वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म्स कैसे है, ये सब मेजर करते हैं हम एक डिवाइस से, उसे कहते हैं पावर फैक्टर. विल सी इन अ वाइल, सॉरी, पावर क्वालिटी एनालाइजर, हाउ दिस पावर क्वालिटी एनालाइजर वर्क्स. तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन उसे टीएचडी रिपोर्ट कहते हैं कि टीएचडी रिपोर्ट जनरेट होता है कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितने हुए. और टोटल डिमांड डिस्टॉर्शंस is also use this terminologies with power quality meter से हम वो मेजर करेंगे. And the formula to calculate the total harmonic distortion for current is THD. For current is फंडामेंटल n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू n जो होगा आई एन, जो फ्रीक्वेंसी आप जो करंट आप मेजर कर रहे हैं और फंडामेंटल करंट होगा उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100. तो दिस टीएचडी इन द गिवन केस अगर है तो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं. एंड यहाँ पे दिखा रहा है कि आई टी एच डी 24% है विच इज अम्पुल. तो आइडियली कितना होना चाहिए? दिस शुड बी, मतलब मिनिमम रेंज 5% होना चाहिए. 5% से ज्यादा है तो आपको कुछ उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा. एंड यू हैव टू minimize these harmonics in order to save your electrical equipments. तो मेजर कॉजेज ऑफ हार्मोनिक्स आर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग, पावर कन्वर्टर्स, यूपीएस अगर है आपके मशीन को अटैच, देन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग यूनिट. एज आई टोल्ड यू एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो प्रोड्यूस करते हैं तो पीएलसी वगैरह वो क्वाइट कॉमन है. तो बट उनके जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज है कि वो हार्मोनिक्स तैयार करते हैं, लाइक आर्किंग डिवाइसेस, फ्लोरोसेंट सोडियम और मर्क्यूरी लैम्प है, आर्क फर्नेस, वेल्डिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम, फेरोमैग्नेटिक डिवाइसेस जो है, and they are also results into harmonics production. Appliances, tv है, air conditioner, washing machine, microwave, fax machine, xerox printer, everything results into हार्मोनिक्स. आप बोलोगे सर घर पे तो टीवी एयर कंडीशनर, लेकिन द लेवल ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस एंड जो आपका number of hours you are using is less. That's why this the effect of harmonics is not that much prevalent. But when in industry, when you are using these devices by 24 by 7 in huge quantity, then it will affect the performance as such. So what are the uh, effects, its harmful effect of this electric by the harmonics is capacitor bank fail हो सकता है, then torsional stresses, endangering rotor circuit and winding of transformer as well as your motors, then ED current hitting as I already told, then over voltage and excessive current, and derating of the cables due to additional electric current, heating and skin effect losses. So the possible electric background may occur. So these are the harmful effects of तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है पावर क्वालिटी में, एंड यू हैव टू चेंज दैट.
तो व्हाट आर द रेमेडीज टू दैट? तो उसके लिए वेव फॉर्म हार्मोनिक टर्मिनेटर्स आते हैं और रिएक्टर्स, उसे इन शॉर्ट कहते हैं कि फिल्टर, हार्मोनिक फिल्टर्स। वो क्या करते हैं, इस जो ये जो डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म है इसको फिल्टर करके क्लीन कर देता है ऐसे। जैसे एज अ पोल्यूशन, इलेक्ट्रिकल पोल्यूशन है तो उसको फिल्टर करके वो इम्प्योरिटीज को निकाल देना है। वेरी सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज, राइट? तो वेव फॉर्म हार्मोनिक टर्मिनेटर्स होते हैं, सिंगल फेज यूनिवर्सल हार्मोनिक फिल्टर, थ्री फेज एडवांस ऐसे फिल्टर्स होते हैं। रिएक्टर्स भी आते हैं, साइन वेव फिल्टर, लाइन रिएक्टर, जिगजैग रिएक्टर। सो दीज आर द रेमेडीज, और इन शॉर्ट इसे कहते हैं हार्मोनिक फिल्टर्स, आते हैं मार्केट में है अवेलेबल। एंड दिस हार्मोनिक फिल्टर्स विल फिल्टर इट आउट, ये जो डिस्टॉर्शन है उसे फिल्टर करके ऐसे कन्वर्ट करता है गुड पावर क्वालिटी में, right? So last part is how power quality is measured. So there are several equipment available in the market in the name of power quality analyzers. And this power quality analyzer serves the purpose of measuring, as well as they nowadays also you can record the data for a very milliseconds to the hours and days also. So they works as a measuring device as well as data loggers. And often power interruptions are unpredictable, तो इस पावर क्वालिटी मेजर में पावर बैटरीज भी होते हैं, दे विल स्टोर द डेटा फॉर लॉन्गर पीरियड। सो यहाँ पे एक पावर क्वालिटी फ्लूक कंपनी का पावर क्वालिटी एनालाइजर दिखा है, एज यू कैन सी ये पावर क्वालिटी एनालाइजर है, वेरियस सिटी करंट ट्रांसफॉर्मर्स आर अटैच्ड टू इट। नेक्स्ट पावर मेजरमेंट के लिए क्लैंप मीटर है जो हमारे पास भी, वेयर दिस इज सिंपल वे बट इट विल नॉट मेजर हार्मोनिक्स, इट विल मेजर टीन पावर, अपरेंट, रिएक्टिव, एक्टिव पावर। एंड this is also very simple way of आप चलते मतलब every electrician is now, or the electrical operator जो होते हैं इंडस्ट्री में, they are carrying this clamp on electrical clamp type meter, and which is very handy। and आप इजीली मोटर है, कोई कंप्रेसर है, उसका जो है उसका करंट वोल्टेज मेजर करके कुछ अगर उसमें एनोमलीज है तो दे कैन फिगर इट आउट एंड फिक्स इट। अगर बड़े लेवल पे पावर क्वालिटी एनालिसिस करना है तो यू कैन यूज सच टाइप ऑफ पावर क्वालिटी एनालाइजर। तो पावर क्वालिटी क्या मेजर करता है, वोल्टेज और करंट, जैसे मैंने बोला कि आरएमएस वैल्यू, फेज रिलेशन बिटवीन द वेव फॉर्म्स, पावर क्वालिटी, सॉरी पावर फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी। पावर फैक्टर भी डायरेक्टली मेजर होता है, इसमें भी होता है, और पावर क्वालिटी एनालाइजर्स में भी आपको डायरेक्टली पावर फैक्टर देता है वो हर मिनट का पूरे डेज में। देन एक्टिव, जैसे बोला एक्टिव रिएक्टिव अपरेंट पावर देता है, कितना kWh कंज्यूम किया है, रिएक्टिव पावर, अपरेंट एनर्जी, एवरीथिंग इज मेजर। हार्मोनिक्स मेजर करके देता है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। देन हाउ पावर क्वालिटी इज मेजर, तो यहाँ पे पावर क्वालिटी एनालाइजर ये थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है। थ्री फेज है तो यहाँ पे आप तीन फेज देख सकते हैं, एंड वन ब्लैक इज फॉर न्यूट्रल, क्लियर। एंड फोर वायर है तो न्यूट्रल और ग्राउंड ऐसे उसको एडिशनल होता है, क्लियर। तो यहाँ पे दिखा है, एज यू कैन सी दैट ग्राउंड है, ग्रीन ग्राउंड है, देन यहाँ पे एक रेड है, ब्लू है, एंड ब्लैक है, और न्यूट्रल यहाँ पे ग्रे कलर पे। तो ये है थ्री फेज के लिए तीन, और फोर वायर है, ओके, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। एंड दिस इज अटैच टू, ये थ्री फेज सिस्टम को कैसे क्लैम्प किया, देखो ये रेड कलर में क्लैंपिंग है, करंट वो आपको करंट्स देता है, और वोल्टेज के लिए हम डायरेक्टली उसको कनेक्ट करते हैं वोल्टेज, तो ये वायर वोल्टेज देता है। और जो राउंड है सर्कुलर, ये क्लैम्प दिख रहा है, क्लैम्प किया हुआ है, दिस क्लैंपिंग इज, ये करंट मेजर करता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रिंसिपल है उसके बेस पे करंट, इसे कहते हैं सिटीज, करंट ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं। दिस करंट ट्रांसफॉर्मर विल मेजर द करंट, एंड वोल्टेज के लिए आप डायरेक्टली वायर्स उस दो फेज के बीच में लगा दोगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा, बिटवीन द फेज और बिटवीन द न्यूट्रल एंड द फेज, जैसे वोल्टेज चाहिए वैसे मिलेगा। देन पावर क्वालिटी एनालिसिस, ऐसे रिपोर्ट जनरेट होते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दीज रिपोर्ट्स दे विल, इट विल डायरेक्टली शो कि कहाँ पे साइन वेव्स वगैरह डिस्टॉर्ट हुए, किस इवेंट में, व्हेन दिस ऑकर, द टाइम, द प्रिसाइज इंफॉर्मेशन यू विल गेट, एंड यू विल देन एनालाइज कि इस पर्टिकुलर टाइम में ही क्यों डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, कौन सा मशीन शुरू हो जाता है कि बिकॉज ऑफ दैट कि तब आपका साइन वेव्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, एंड यू विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। देन पावर क्वालिटी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, IEC 61000, ANSI,
आई ट्रिपल ई 1159, तो अलग अलग स्टैंडर्ड ये सब का कॉम्बिनेशन आपको एक ही पावर क्वालिटी एनालाइजर लोगे तो एवरीथिंग इज accommodated in that. Then in our lab we are having a Megar power quality analyzer as shown here, and this Megar power quality analyzer 1000 उसे कहते हैं MPQ 1000 है हमारे लैब में. And this MPQ 1000 का जो range and everything, it is class A IEC 6100430 का compliant है. And the application, as you can see that it is used to testing any पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड, पावर फैक्टर स्टडीज के लिए, लोड स्टडी, लोड बैलेंसिंग के लिए, जैसे हमने देखा था अनबैलेंस एंड बैलेंस जो फेजेस होते हैं, बिलिंग वेरिफिकेशन, सबस्टेशन मॉनिटरिंग, कैपेसिटर बैंक साइजिंग के लिए. सो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस. सोलर नाउअडेज सोलर पीवी का एनालिसिस करने के लिए भी पावर क्वालिटी एनालाइजर यूज होते हैं. और वो क्या क्या मेजर करता है, दैट वी ऑलरेडी फ्लिकर्स एंड ऑल दैट, अनबैलेंस, हार्मोनिक्स, total harmonic distortion, total demand distortion, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज मेजर. फेज एंगल्स, वो आपको एंगल्स देते हैं कि फेज में है नहीं है, फेज टू फेज वोल्टेज, एवरीथिंग, वोल्टेज सैग्स, डीप swells. So whatever electrical parameters we have discussed, everything is you will get in this analyzer. Where this is the analyzer, this blue circles or blue rings are nothing but it is the CT, current transformer, measures used to measure the current. इसका एप्लीकेशन है दिस सिटी सेंटर मॉल में, जो कंप्रेसर है, चिलर जो है, उस चिलर का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई, आप ये देख सकते हैं कि रेड येलो ब्लू RYP. तो RYP के अक्रॉस तीन लगाए हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 करंट. तो ये तीनों रेड फेज, येलो और ब्लू में कितना करंट जा रहा है, तो कोई आपको डायरेक्ट क्लैम्प करके डायरेक्ट मिलेगा, आपको कोई ऐसे कट करके वायर लगाना. दिस इज द क्लैम्पिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर. तो आप करंट क्लैम्प करके करंट की वैल्यू देगा. और आप देख सकते हैं कि आर वायर को यहाँ पे कुछ वायर्स लगाए हुए, ये वोल्टेज के लिए, राइट. और एक ब्लैक को लगाया है, दिस इज फॉर द न्यूट्रल. क्लियर. तो RYB और N यहाँ पे आपको दिखेगा. और एक ग्राउंड, ये एक येलो क्लिप दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द ग्राउंड. क्लियर. तो RYB न्यूट्रल ब्लैक, और ग्राउंड के लिए दिस येलो. तो ऐसे ये 3 फेज 4 वायर है, 4 वायर है ना, 3 फेज के 3, और चौथा इसको कनेक्टेड है. एंड ग्राउंड से भी हम यहाँ पे लेते हैं इनपुट. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट पावर क्वालिटी. I hope you get some insights regarding what is power quality, and uh, how electrical power is important, because electrical power as such is not only related to uh, the thing कि electric bill कितना आ रहा है, bill कम करो. No, there are lots of things like the air pollution, soil water pollution, electrical pollution nowadays a very important parameter, and every industry is trying to reduce this electrical pollution, and they wish to have a clean power, right. Any question from your side? And this is the last part of that unit, and here I will declare this unit is over. I would like to hear from your side. I understand that as a mechanical engineer, it is very difficult to assimilate this term in one single stroke, but I hope you will at least understood the importance of electrical, knowing the basic electrical parameters. So the one thing that I am expecting from you, at least it will create some interest in electrical terminologies that you will definitely work in future, because you cannot escape. पंप यूज करो, compressor, boiler है, कहीं पे भी जाओ, electrical motor, electrical fan, everything is attached to that, and you have to deal with the electrical parameters. There is no escape if you wish to work in industry. So why not to prepare from now. And as an energy auditor, अगर आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं in energy audit, तो it is mandatory to know the electrical terminologies, because आपको सिर्फ thermal audit नहीं करना होता है, electrical audit is also there. So I hope I make these electrical things clear to you, and it will uh, if you wish, I will share lots of literature I am having with me. So I will just share that on Google Classroom.
Any question from your side? If no, say no so that I will conclude today's session. Any question, any difficulty, anything you wish to ask? Nope. Okay. Thank you all. I will end today's session.